So let's say there is a question, just to explain what we would be doing. That there is a question that says, don't take it, sir ने पढ़ाया नहीं और sir करवा रहे. I'll teach you everything. No worries. I just want you to be on the same page. So the question says let's say there is an equation that says Mg plus KClO3 produces 3MgO and then KCl. Okay. And then they say the standard enthalpy changes of formation. Now, what is enthalpy change of formation? We'll do it. Enthalpy changes of formation are given below. And then we have a table here that says MgO, KCl, KClO3, and what do we have here is minus 602, minus 437, and minus 3921. All are measured in kilojoules per mole and symbolically written as delta, that's a triangle, H for enthalpy heat, F formation. Okay. And then we draw this sign. This sign is usually what I won't be drawing many times, a circle with a line. Okay. So question to you is, it says, what is the what is the standard enthalpy change? So would you like to give me some answer? Maybe that can be a wrong answer. No issues with that. Hold on. Hello? Oh, sorry, I'm thinking. Wait a second. Sorry? I'm reading the question. Wait a second. Okay. I don't know. Sir, are you there? Hold on. Yeah, I am here. Internet connection was a bit lagging. Ji, bole? Okay. I don't get it. You don't get it. Okay, let's do it together. So these values, what do they mean? They mean कि यहाँ पे कुछ है, इसकी कोई value दी हुई है, ये भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी कुछ दिया हुआ है. So this is what they mean. अच्छा, मजे की बात ये है कि इसमें एक चीज मिसिंग है. मिसिंग क्या पे मिसिंग है? मिसिंग ये क्यों है? क्योंकि इंथैल्पी चेंज बेसिकली क्या होता है? बेसिकली केमिकल चेंज होता है. केमिकल चेंज उस वक्त होता है जब ओरिजिनली वो कोई कंपाउंड हो ना. सो यू डोंट सी दिस एज अ कंपाउंड, राइट? दिस इज बेसिकली व्हाट, एन एलिमेंट. तो इसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर इसकी इंथैल्पी चेंज की या इसकी एनर्जी चेंज की कोई जरूरत होगी नहीं. इट्स लाइक कि अगर मैं फॉर एग्जांपल खाना खाता हूँ, तो उसमें काफी सारी चीजें हैं. जब मैं खाना खाऊंगा तो फिर मैं अपनी, मेरा जो स्टमक है उसके अंदर जो एसिड है वो खाने से रिएक्ट करेगा, राइट? अच्छा, अब मैं किसी को बोलूँ यार मैंने बहुत ज्यादा हवा खाई है, सो वो बोलेगा, समझ जाएगा कि इसका मतलब है कि ये भूखा है.
As in हवा खाना is not food because हवा is not basically there for providing us energy. mg तो सीन से आउट हो गया क्योंकि mg यहाँ पे एक एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है, प्योर कंपाउंड नहीं है, तो इसको तो हमने इग्नोर कर दिया और हमें डेटा सेट में नजर भी नहीं आया. लेकिन remaining three, these are basically compounds and we see that their values are given, right? Now we need to think what these values are. These values basically they show that this potassium chlorate, that is KClO3, will react with magnesium, and then there may be some bond breaking between potassium, chlorine and oxygen, and then there is new bonding that is formed between MgO and KCl. You get it? Yes. That means कुछ energy लगेगी इसके bond break करने में, कुछ energy लगेगी इसके bond form होने में, कुछ energy लगेगी इसके bond. Make sense? Yes. अच्छा, अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि ठीक है चलो ओके, ये हो गई बात कि भाई वहां पे जो है वो ऐसा है और क्या कहते हैं ऐसा है, ठीक हो गया, बात जबरदस्त होगा सीन. अब सवाल ये है कि क्या कहते हैं हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं. तो जब हम, जैसे मैंने ओ लेवल्स का रेफरेंस दिया था, तो वहां पे हम ये करते थे कि हम इंथैल्पी चेंज निकालते थे और हम निकालते थे इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स. इसकी हिंट मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए दूं, अगर एक हम ग्राफ बनाते थे, रिमेंबर, यहाँ रिएक्टेंट्स लिखते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखते थे और वो ग्राफ यूं करके बनता था. सो अगर प्रोडक्ट्स जी. पर अबव रिएक्टेंट्स, दैट मीन्स कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है. और अगर जो है वो रिएक्टेंट्स का लेवल जो है वो ऊपर है, प्रोडक्ट्स का नीचे है, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक है. कुछ याद आता है? जी. हेलो, Yes. आई कांट हियर यू. हेलो, Can you hear me? इट इज वेरी, Yes, sir. ये तुम्हारी, आई थिंक हमारी तबीयत काफी खराब. ओके, आई विल यूज अ हैंड. No, no, I'm saying yes. I think there's a problem with the connection. दिस इज व्हाट वी डू टू कैलकुलेट मिलाज एंड थिंग्स लाइक. अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं इसकी एंथैल्पी चेंज क्या कैसे निकालूं, तो सबसे पहले तो आई सी कि मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है और पोटेशियम क्लोराइड है. दीज आर व्हाट प्रोडक्ट्स, राइट? Yeah. और इंडिविजुअल एक की मुझे पता है, मुझे पता है एमजीओ की -602 है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स एमजीओ है, तो आई विल क्रिएट एन इक्वेशन 3 टाइम्स -602. मेक सेंस? Yes. Do you get this one? Yes. अच्छा, Yes, sir. we have KCl. KCl is -437. So KCl का coefficient 1 है, तो 1 times -437 is still -437. So अब eventually हमें क्या करना है, हमें निकालनी है basic. तो हमने ये निकालनी है इस तरह से. हम कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट्स है ना, तो प्रोडक्ट्स की टोटल एनर्जी हमें चाहिए. तो टोटल एनर्जी प्रोडक्ट्स की निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? टोटल एनर्जी प्रोडक्ट्स की निकालने के लिए हमें इन्हें ऐड करना है. अब देखो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, इन्हें ऐड करना है, तो अगर मैंने यहाँ प्लस लिख दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. यू गेट माई पॉइंट? Yes. अब कैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो Hmm. अ नेगेटिव वैल्यू, राइट? मेक सेंस? Yes. तो ऐड इवेंचुअली Yes. करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐड करना चाहता हूँ इन वैल्यूज को, तो इन्हें ऐड करता हूँ. कैलकुलेटर निकालते हैं. अच्छा, तुमने चैट में मुझे आंसर भी भेजा. मैं बोल रहा हूँ मीटिंग में मेरे और ईमान के अलावा कौन है? ओह माय गॉड. Oh. तो दिस वुड बी प्लस, ठीक है, एंड दैट वुड बी, Mhm. तो ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. तो then अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सो सॉरी अमन, सो सॉरी. मिनट, मुझे सिर्फ ये तुम्हें एक्सप्रेशन समझानी है. ये बताओ यहाँ तक बात समझ में आई है? अभी फिलहाल सिर्फ ये जी. दैट इज व्हाट प्रोडक्ट्स, step by step chart. Yeah. I'm so sorry I got confused with your message on the chat. No. Sorry about that. मैंने कहा I यार thought you couldn't hear मीटिंग me, में so कौन I कौन सा said that उसने. I should just type it in. तो अच्छा ठीक है, Sorry? दिस इज व्हाट आई डिड, दिस इज वेरी क्लियर. अब एक ही और चीज बची है. क्या बचा है? रिएक्टेंट बचा, राइट? प्रोडक्ट्स जी. आ गए, ये रहा प्रोडक्ट.
फिट हो गया इधर। रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो रिएक्टेंट के लिए क्या अवेलेबल है? रिएक्टेंट के लिए अवेलेबल है KClO3, और KClO3 का कोएफिशिएंट भी 1 है, राइट? सो -391 होगा रिएक्टेंट का, ऐसे ही है, you get it? Yes. So let's Yes. substitute these values here in this equation. So products के लिए I have written मतलब 3 times -602, and you get it कि ये कहाँ से आया, plus -437, you get it कि ये कहाँ से आया, and that completes the product वाला part, right? जी. Understood? Hmm. Then Yes. minus reactants, और reactants में हमने क्या लिखा हुआ, -391, do you get it? Yes. अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी, और निकालते थे 3 times 02 is basically -1806 -437 plus 391, so 1806 437, this would be -2243 plus 391, and this would be -1852. Did you get this? Yes. अब देखते हैं तुमने क्या निकाला। So that was something else. वो मैंने पहले वाले का निकाला था for the product. So do you get this part? इस चैप्टर में हमारा Yes. Sorry. चैप्टर में हमारा जो बेसिक डिस्कशन होता है वो इस ही टॉपिक के ऊपर होगा, बाकी इसमें थ्योरेटिकल पार्ट काफी ज्यादा है। तो वो थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, आई विल शो दैट टू यू, जस्ट अ मिनट। मुझे तुमसे डिस्कशन करना होता तो वो थोड़ा अच्छा हो कि मेरे पास मिल जाए ना, वरना मुझे वो मजा नहीं आएगा। कहाँ गया भाई ये इसमें, और इसमें होना चाहिए ई में, तो 10 हो गया। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes. अच्छा, तो अब इसमें मैं बेसिकली क्या समझा रहा हूँ, देखो इसमें मैं तुम्हें अब समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वी आर डीलिंग विद एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक मींस एनर्जी चेंजेस, दोस केमिकल रिएक्शंस which have energy change. They would be either exothermic or either endothermic. If they are exothermic, they will give off us heat, and if they are endothermic, they will take heat from us. Usually, जो bond formation होती है, उसमें we have primarily speaking, that is basically always an exothermic reaction, and bond breaking is always an endothermic reaction. Usually, this happens. Okay? So when we are talking about an energetics chemical reaction, we deal with primarily those chemical reactions and things where we kind of are expecting there has to be a heat change. Now, let's say if we talk about normal, chemical reactions, every chemical reaction may not either be an exothermic or endothermic. Let's say if we talk about respiration, what do you think respiration is? Is it exothermic or is it endothermic? It's exothermic. Exo. Do you think respiration is chemical reaction? Yes. And what chemical changes are happening in respiration? Sorry, can you come again? तो रेस्पिरेशन में किस तरह के केमिकल चेंजेस हो, बताओ। The formation of glucose. अच्छा, okay. And how is it formed? I mean the burning of sugar with oxygen. Okay, जबरदस्त, ठीक है। तो बेसिकली जो क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन
The basic Sorry, I was mechanism telling देखो the ये है कि photosynthesis we wala. take in oxygen and we release carbon dioxide, right? Right. And then that reaction is supposed to give us energy, and that energy is being released from our food to us. So that is exothermic within our body. Outside हमें कोई heat नहीं नजर आ रही, right? So exothermic is a very good explanation of respiration is a very good example for exothermic reaction. That's wonderful. Now give me an example of endothermic reaction. Will it be photosynthesis? Zabardast, Zabardast. That's okay. So enthalpy change basically deals with all kind of these chemical reactions. Term बड़ी अजीब सी है कि enthalpy change लिख दिया. Enthalpy change essentially is energy change. You get it? Okay. अच्छा, Yes. इसका कॉन्सेप्ट देने में बड़ा मजा आता है अगर बच्चा थोड़ा मूड में हो सुनने के लिए, तो पूरी ध्यान से बात सुनना. स्टोरी सुनाऊंगा, कुछ लिखूंगा नहीं. Enthalpy basically is energy in flow, energy in moving from one point to another. It's like wave. Simple energy, if it stays in a body, it's not then enthalpy, it's only energy. अब इसकी क्या एग्जांपल देता हूँ. देखो लेट से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं उस खुशी को अपने अंदर ही रखे हुए हूँ. प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, अगर मैं खुश हूँ तो मेरे इर्द गिर्द कोई दुखी होगा ना, मैं सबसे पहले जाके उसको खुश करने की कोशिश करूंगा. उसको बोलूंगा हाँ बताओ क्या हुआ जिंदगी में. तो उसको खुश करूंगा, उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उससे बातचीत करूंगा. वो गुस्सा भी हो रहा हो ना तब भी आई ट्राई टू स्प्रेड आउट माई एनर्जी. यू गेट इट? So I have Yes. utilized my inside energy, that is internal energy, and now that internal energy is motivating me to become enthalpy. So energy in a flow. You get it? Yes. Now, if we talk about being, just as you were thinking, photosynthesis. Photosynthesis is not only happening, at a certain place. It basically goes through the entire system of, human body, right? Right. हर जगह पे ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, उसमें स्टमक का भी काम है, तो लिवर का भी काम है, तो पैनक्रियास का भी काम है, तो इंटेस्टाइन चीजों का काम, राइट? तो इट बेसिकली इज अ फ्लो, राइट? तो वो फ्लो में काम हो रहा है ना. तो इन एनर्जी ऐसे नहीं हो सकता कि हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसका टेम्परेचर ज्यादा और नीचे वाली बॉडी का कम हो. ऐसा नहीं हो सकता. यूजुअली इट शुड बी सेम, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज इन अ फ्लो. मेक सेंस? Yes. So that is what we mean by enthalpy change. Energy change तो होता है, but it has to be coupled with what? Motion, flow, movement. We get it? So rather of, instead of saying in energy change of a reaction or energy change, we label this as enthalpy change because we kind of believe that this is in motion, mobility के अंदर है, एक जगह पे नहीं है. You get it? Yes. Do you get it? Yes. Now there are various forms of enthalpy changes which we have to study in our AS levels. मैंने क्या किया, मैंने उनकी लिस्ट बनाई है. आप देख रहे हो 1, here are 2, here are 3, here are 4, here are 5, here are 6, here are 7, 8, 9. ठीक है, 9 तक मैंने किया. 9 तक बेसिकली पुराने सिलेबस में, यानी कि जब से मतलब एएस का सिलेबस अपडेट हुआ था लास्ट, जब से आज तक जितनी भी फॉर्म्स कभी आई हैं कभी निकली सब है. तो मैं अब बच्चों को ये सब पढ़ाता हूँ. क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि कैम्ब्रिज का दिल चाहता है तो वो इसमें से कोई एक पूछता है, दिल चाहता है तो नहीं पूछता. You get it? So they being part of the syllabus really doesn't matter. They can ask us anything. So better be prepared for everything. Now what you need to do is you need to learn this. अगर मैं कहता हूँ enthalpy change of reaction है, what do I mean by that? Remember the question we were doing, उसमें मैंने क्या निकाला था? enthalpy change of the reaction निकालो. ऐसे ही कह रहा था ना. Formation निकाल. तो enthalpy change of reaction निकालने का क्या मतलब है? मैंने जनरल से एक बात कर दी है. जनरल से एक बात करने का क्या मतलब है? मैंने जो है ना एक रिएक्शन दे दिया आपको. वो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है. वो रिएक्शन हम नजर आ रहे हैं यहाँ पे, देखो ये रिएक्शन सिंपल एडिशन रिएक्शन है. मैं इसे एडिशन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देयर आर टू गैसेस, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दे आर बीइंग कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल गैस. मैंने इसको भी एडिशन, मैं इसको रिएक्शन कह सकता हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है? इट्स नॉट एडिशन रिएक्शन, बेसिकली इट्स अ substitution, displacement. Better terms, neutralization reaction. You remember a reaction between an acid and a base? Yes. So that is basically enthalpy change of a reaction. So when we say Neutralization. enthalpy change of reaction, we generally talk about the general perception
any chemical reaction, we don't specify that chemical reaction to be a certain type. We don't mean anything by that. कुछ भी हो रहा होगा तो reaction तो हो रहा होगा ना. That's what my teacher used to tell us. कि reaction तो है ना चाहे जैसा भी है. आप बच्चे कहते हैं सर रिएक्शन कैसा हो सकता है तो भाई इसके अलावा 9 और 8 और टाइप्स है ना जो हम पढ़ेंगे. So enthalpy change of reaction basically covers all possible types of reactions, whether they are exothermic, whether they are endothermic, whether they are addition, whether they are decomposition, anything. So when they say calculate enthalpy change of reaction, things are very easy. Why? Because there is nothing to be worried about. 1 minute. जी आंटी बोले. Okay. Do you get this part? Yes, sir. तो मुझे 5 minutes देना जब तक तुम रीड करो. कोऑर्डिनेटर बुला रही है. I need to check the okay. Okay, okay. Hello. Yes, okay. Can you hear me? Yeah, okay. ठीक है. One more option is part of all expressions extent.
Yeah, I'm back. Can you hear me? Sorry? Can you hear me? I'm back. Yes, yes. Yeah, okay. So enthalpy change of reaction was this. Then we have enthalpy change of formation. What do we mean by enthalpy change of formation? We mean to say that if there is a substance that is formed from its elemental state, that is very important. You know, you see here as the chemical reaction written here. What you see basically is this substance, that is sodium, chlorine, and oxygen, that is sodium chlorate, that is formed from sodium, from chlorine, from oxygen. Okay? Sodium, Yes. chlorine, and oxygen. So this is basically formed from these three substances. And what we need to keep this in mind is sodium is not originally combined with anything. Sodium अकेला है बिल्कुल. क्लोरीन भी किसी और चीज से नहीं कंबाइन हुआ. ऑक्सीजन भी किसी और चीज से कंबाइन नहीं हुआ, बिल्कुल अकेला है. अब सवाल ये कि सर लिखा हुआ तो O2 है, लिखा हुआ तो Cl2 है. हाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन ये अपनी नेचुरल स्टेट में ना क्लोरीन ऐसे ही मार्केट पे अवेलेबल है, ऑक्सीजन ऐसे ही अवेलेबल होता है. सोडियम और क्लोरीन नहीं रिएक्ट कर रहे, क्लोरीन और ऑक्सीजन नहीं रिएक्ट कर रहे, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, और बिल्कुल मिलके एलिमेंटल स्टेट में जाके एक नया रिएक्शन करा रहे हैं, और जो भी सब्सटेंस बना रहे हैं उसका 1 मोल है. तो इस रिएक्शन के बीच में आफ्टर दैट वट एवर हैपेंस, जो भी इंथैल्पी हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट वुड कम अंडर इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्म. Yes. एक टर्म यूजुअली यूज होती है, एक होती है आरटीपी और एक होती है एसटीपी. तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो बेसिकली घूमती है आरटीपी के ऊपर. तो आरटीपी इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर. तो ये बेसिकली बस ये याद करनी है और इसके अलावा कोई है. Yes. Then we have another example, hydrogen elemental state, sulfur elemental state, oxygen elemental state में कोई और बॉन्ड नहीं बना हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, तो क्या होगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. Formation. देन इज कंबस्शन. कंबस्शन ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है, बस ये ध्यान में रखना होता है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो. तो इतना ऑक्सीजन हो, इतना ऑक्सीजन जरूर हो कि जो प्रोडक्ट बने वो डाइऑक्साइड हो. वो मोनोऑक्साइड Okay. अगर होगा तो फिर उसे हम इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन में नहीं लाएंगे, उसे हम इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में ले जाएंगे कि ये बन तो रहा है, 1 मोल बन रहा है, लेकिन 1 मोल ये हमारे पर्टिकुलर ऑक्साइड का नहीं बना. You get it? Yes. Enthalpy change of neutralization, तो एसिड और बेस का रिएक्शन, इसमें एग्जैक्टली 1 मोल बनेगा वाटर का या सॉल्ट का, तो दैट enthalpy change of neutralization. Then we have enthalpy change of solution. ये बड़ा मजेदार. सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे पानी के अंदर अगर नमक डालें, तो अब ये बड़ी अजीब सी बात है, पानी लो घर में, नमक डालो, मिक्स करो, हल्का सा गर्म करो, you get it? हल्का सा गर्म, दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों होता है? क्योंकि वो जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, और जो है वो बेसिकली जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होते हैं, वो इसको जो है ना सर्कुलेट करके इसके साथ अटैच होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं ताकि उसको डिसॉल्व कर सके. तो जो भी हीट रिलीज होगी, दैट वुड बी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन. नाउ एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन में एक्चुअली केमिकली रिएक्शन होता है. देखो, नमक और पानी में अगर हम मिक्सिंग करते हैं ना, तो नमक अलग हो सकता है पानी से. कैसे अलग हो सकता है, तुम बताओ मुझे. By boiling, जबरदस्त. और evaporating. और बाय फिल्ट्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? Filtration. नहीं Yeah. हो सकता, बाय क्रिस्टलाइजेशन होता है. तो असल टर्म तुम्हें कहनी चाहिए थी बाय क्रिस्टलाइजेशन. नहीं. Filtration. Yes. Yeah. ठीक है. तो अब आते हैं कि अब हाइड्रेशन के अंदर क्या है. हाइड्रेशन के अंदर आप बॉयल भी कर लेना तो भी सब्सटेंस अब गया, सब्सटेंस तो चेंज हो गया. अब आप उसे अलग नहीं कर सकते, सब्सटेंस की नेचर ही चेंज हो गया. इट हैज नाउ बिकम सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाना, तो पानी के साथ रिएक्शन हो जाना, इसका मतलब है अब दिस इज नॉट सॉल्यूशन, इसको रीजेनरेट नहीं कर सकते. ठीक है. Oh. Yes. तो हमें ये याद रखना है कि whenever we are discussing solution, we'll say कि एक सॉलिड था जो लिक्विड में गया है, या गैस है लिक्विड में गई है, और वो रिवर्सिबल भी है ना, एक्वस बना है, वो वापस जा सकता है. लेकिन अगर हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, तो कोई भी कैटाइन है
कोई भी कैटाइन है जो गैसियस फॉर्म में है, और जिस भी सब्सटेंस में वो जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, दैट वुड बी ओनली हाइड्रोजन। ओके। ये सब फिंगर टिप्स में होने चाहिए, ये सब याद होने चाहिए, हिफ्ज होने चाहिए। देन लैटिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इन क्रिस्टलाइजेशन, कि एक कैटाइन एनाइन गैसियस फॉर्म में कंबाइन हो और एक क्रिस्टल लैटिस बने। ये उस वक्त होता है जब नमक बन रहा होता है ना, जैसे लेट से हमने सोडियम क्लोराइड जैसे सोडियम एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्लोरीन एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उनको रीजनरेट होने का टाइम है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज व्हाई देयर स्ट्रक्चर इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रांग। तो ये हो रहा है। देन एटमाइजेशन की बात करें अगर हम, एटमाइजेशन में एक सिंपल सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस वेपर से, ठीक है। इसी तरह से एक बेसिक जो कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये डीकम्पोजिशन बेसिकली होती है, जिसमें हमने फॉर्मेशन का एग्जैक्टली उल्टा किया हो। अंडरस्टूड? यस। these are to be learned and these are basic various types. Then we say कि एक टर्म आपको बतानी है एक्सोथर्मिक के लिए, पहले तो यहाँ आते हैं एक्सोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगी, हाई अमाउंट की रिलीज हो रही होगी, यानी कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो कम होगी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग है वो यहाँ पे। You get this part? हम्म। यस। एंडोथर्मिक में एग्जैक्टली उल्टा होगा, तो ये बात पता होनी चाहिए। और कोई ऐसी बात नहीं है जो मतलब आपको यहाँ पे तंग करे, आप बेसिकली अगर थोड़ा ओ लेवल से भी स्ट्रॉन्ग है आप कर सकते हैं। देन मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज अ क्वेश्चन, एंड देन माय क्वेश्चन टू यू वुड बी नाउ कि तुम मुझे बताओ कि ये किस पे फिट होता है, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन पे, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पे, क्या तुम्हारे? Will it be formation This is formation of rivers and and reaction? reaction, yes. And there is excess oxygen but nothing is burning up. So combustion तो नहीं हो सकता. Combustion भी ये होगा because excess of oxygen is there, Mm-hmm. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो उसको मिस नहीं करो, एनर्जी तो रिलीज होती है इसमें भी। Okay. तो कंबस्शन के लिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी नहीं है। Okay. You get it? Yes. तो इसे मैंने फिर लेबल किया हुआ है एज फॉर्मेशन एंड रिएक्शन, यानी इसे ऑक्सीजन वो कंबस्शन के अंदर लेबल नहीं किया हुआ, इसे हमने लेबल किया हुआ है एज लैटिस, एंथैल्पी चेंज ऑफ ये लैटिस हो। वी गेट इट? Yes. इसे हमने लेबल किया हुआ है एज एटोमाइजेशन, कि एक एटम ब्रेक हो रहा है उसमें। देन वी हैव बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग बेसिकली एनर्जी होगी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये डिस्कस हुआ है कि लेट्स से वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दे कंबाइन एंड एज अ रिजल्ट दे रिलीज सम एनर्जी। Okay, fine, that means this should be an exothermic reaction. Okay, then we have +2 charge and then we have -2 charge, so what you see is an energy change of -2e। क्या समझ में आया? अगर आयंस स्ट्रॉन्ग है यानी कि चार्ज ज्यादा है, तो एनर्जी रिलीज भी क्या है, ज्यादा है। अगर चार्ज वीक है तो एनर्जी रिलीज भी क्या है, कम है। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि टेल मी दिस, कि अगर मैं NaCl की बात करूं और मैं MgO की बात करूं, तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसकी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि मैग्नीशियम का चार्ज +2 होता है, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2। इसकी बॉन्ड एनर्जी कम क्यों होगी? क्योंकि सोडियम का चार्ज +1 होता है और क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1। वी गेट इट? Yes. Then we have this concept कि lattice energy is proportional to charge, ये भी बात की हमने, but lattice energy is inversely proportional to radii। क्या मतलब है इस बात का? अगर हमारे पास एक बड़ा जाइंट एटम है जिसका साइज बहुत बड़ा है और एक छोटा एटम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका लैटिस स्ट्रक्चर वीक होगा और इसका लैटिस स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मेक Wrong. सेंस? Yes. ठीक है, then this is that। Then we have discussed here enthalpy change of हाइड्रेशन। इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑलमोस्ट वही ट्रेंड शो करती है जो लैटिस शो करती है, सो दैट नीड्स टू बी लर्नड अगेन, ये चीजें याद रखने वाली हैं। देन वी हैव हेसेस लॉ लेफ्ट। तो हेसेस लॉ के ऊपर हम बाद में जाएंगे। आई विल आस्क यू टू
keep things up till here, and I'll send you some questions, and you try to attempt that now, and then we'll do. Okay. Hello. Yes, I'm here. Anything you want to discuss? Sorry? Anything else you have in mind? Any questions? Any doubts? No, everything's clear. I'll share these slides with you up, and I'll share the other slides with you as well, and I'll share some questions. Okay. Okay. Right. We can end the class. Okay. Allah Hafiz. Yes.